US President Donald Trump says excited to visit India next week. Also says he likes Prime Minister Modi a lot and looks forward to be greeted by over 7 million people expected to line up the streets between the airport and Motera Stadium in Ahmedabad. Major boost for farmers. Union Cabinet approves Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana voluntary for farmers. 10,000 food production organizations to be set up across the nation. Union Cabinet approves launch of second phase of Swachh Bharat mission that will cover all rural areas as well. Union Minister Smriti Irani says will introduce assisted reproductive technology regulation bill in this session of the Parliament. Prime Minister Narendra Modi visits stalls of master artisans, craftsmen and culinary experts from across the country at Hunar Haat in Delhi. Interacts with participating artisans, witness cultural programs, says Hunar Haat reflects government's commitment to provide employment opportunities and preserving and promoting India's indigenous traditional legacy. First meeting of the newly constituted Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust underway in New Delhi today. 15-member trust headed by senior advocate K. Parasaran likely to decide the commencement of construction date of Ram Temple. COVID-19 claims 2,000 lives in China. Beijing releases first detailed medical report of the deadly outbreak. All 406 people at ITBP quarantine facility discharged and 248 people at Manesar army camp also sent home. Supreme Court invites Union Road Transport Minister Nitin Gadkari to discuss issues relating to Centre's plan of switching all public transport and government vehicles to electric vehicles over a period of time in order to curb air pollution. Major breakthrough for security forces. Jammu and Kashmir police gunned down 3 terrorists in Tral during search operations. All 3 terrorists identified. Good evening, I'm Shubhendu Ghosh. United States President Donald Trump has said his big deal with India will be done soon, perhaps before the presidential elections in November. Now, this comes days before his maiden bilateral visit to India next week. Here's more. Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. Meanwhile, Ahmedabad is all set to welcome President Trump on Monday. From Howdy Modi in Houston to Namaste Trump, the bonhomie between President Trump and Prime Minister Modi will add another leaf to the India-US ties. President Trump reciprocating India's Namaste Trump call. This will be his first bilateral visit to India. Prime Minister Narendra Modi will host President Trump in Ahmedabad as well as New Delhi on the 24th and 25th of February. Like the Howdy Modi event in Houston, Namaste Trump event will be held at the Sardar Vallabhbhai Patel Stadium or the Motera Stadium after it is inaugurated by the US President on the 24th of February. A land where cricket is not just a game, it's a religion. This land now has the world's largest cricket stadium and will be hosting US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi on the same stage at its inaugural. I happen to like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. And in keeping with tradition, President Trump will also visit the Sabarmati Ashram in Gandhinagar to pay tributes to Mahatma Gandhi, accompanied by Prime Minister Modi. ये गांधी जी का निवास स्थान हृदय कुंज में सबसे पहले आकर गांधी जी के फोटो पर जो है डोनाल्ड ट्रम्प जी और उनकी वाइफ इस तरह से सूत की माला पहनाएंगे. एक चरखा गैलरी है, करीब 34 मॉडल्स बने चरखे के, कताई के, वो वहाँ जो रखे गए हैं
उनका दर्शन उनकी भी वो देखेंगे। When President Donald Trump will be on his maiden visit to India, Gujarat is all set to welcome him. All the posters are up. There are several billboards, also posters depicting Prime Minister Narendra Modi, President Donald Trump and the First Lady Melania Trump on the posters. Also, the posters speak of the amalgamation and the meeting of two big democratic countries and all the things, all for the road show and for his different visits to different places. All of it is being kept into place, and Ahmedabad and Gujarat is all equipped to host the US President and its First Lady. With camera person Sumit Nadia, this is Meghna Dev, DD News, Ahmedabad. And away from the hustle bustle of Gurgaon is a village with an interesting story attached to its name. Daulatpur, Nasirabad was a sleepy, nondescript village on the outskirts of Delhi. It found a prominent place on the global map after Carter paid a visit in this village in 1978. Carter Puri is a great example of people-to-people connect. More in this report. Around 25 kilometers from Delhi, there is a Haryana village with an interesting America connect. Named after former US President Jimmy Carter, this village is called Carter Puri. This village, which was earlier known as Daulatpur, Nasirabad, got its present name after US President Jimmy Carter visited here in 1978. During his India visit in 1978, Carter went to his village and interacted with the villagers. The villagers tell the story with a lot of pride and consider Jimmy Carter to be a family member. ये गांव की जमीन चौपाल है हमारी, इसी के अंदर उन्होंने गांव वालों ने उनका स्वागत किया था। हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने उनकी मिसेज रोजलिन कार्टर को हरियाणा ड्रेस पहनाई, लहंगा, चुन्नी, इंडी जो कुछ थी वो पहना के और बड़ी अच्छी तरह से, जैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज है, थाली से आरती करके उनका स्वागत किया बड़ी अच्छी तरीके से। उस समय वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे इनकी अभी शादी हुई है और बहुत खुश थे वो। उसके बाद वो लगभग 45 मिनट तक गांव की गलियों में घूमे हैं। देसाई जी वगैरह साथ भी थे, गलियों में घूमे और खूब खुश थे और गांववासी जो थे वो सारे खुश थे। And now when President Donald Trump is slated to visit India on February 24th, people here are reliving old memories when a president came calling. Carter Puri village is an example of people-to-people connect in action. Residents of Carter Puri hope for a successful visit of the US President. Urmilesh Bhatt's report for TD India. Some other news now. The Soil Health Card Day is being observed today. It commemorates the day Soil Health Card scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi. That was on February 19, 2015 at Suratgarh, Rajasthan. Coincidentally, the International Year of Soil Health was also celebrated the same year. To mark the occasion, Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare Narendra Singh Tomar addressed a national workshop today. Tomar said that Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been made voluntary for farmers. पिछले दिनों जो अभियान चला उसमें 2 चरणों में लगभग 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए। उनका लाभ हमारे देश की खेती को मिल रहा है, लेकिन अभी इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। He also said that centre has decided to set up 10,000 farmer production centres across the country. The government claims that these centres will improve the living conditions of farmers. 10,000 FPO पूरे देश में बनाए जाएंगे और इन FPO को सहायता देने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 करोड़ से अधिक रुपया उनकी मदद के लिए खर्च करेगी। यह कृषि उत्पादक संगठन जब पूरी तरह शैशव अवस्था से निकलकर तरुणाई अवस्था में आएंगे, उस दिन खेती, किसानी और गांव के जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। Some updates on the cabinet decisions. Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi today approved elevation of Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geoinformatics in Gujarat as Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geoinformatics under Ministry of Electronics and Information Technology.
एक अहमदाबाद की बहुत प्रसिद्ध संस्था भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भास्कराचार्य स्पेस सेंटर को अब नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट करके काम करेगी। अब ये एक स्टेट की थे, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट करके काम करेगी और इसका लाभ सभी को मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा। The cabinet also approved the constitution of an empowered technology group to render the best possible advice on technology to be developed for technology suppliers and technology procurement strategy. एक बड़ा निर्णय हुआ है टेक्नोलॉजी ग्रुप स्थापन करने का। सभी गवर्नेंस में एक पारदर्शिता है और इतनी टेक्नोलॉजी प्रगत हुई है उसका उपयोग हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर सुशासन कैसे होता है ये इसमें किया जाएगा काम। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी ग्रुप में सभी प्रकार के विशेषज्ञ रहेंगे और आगे चल के किसी भी इंडस्ट्री को भी टेक्नोलॉजी के बारे में सलाह देने का काम ये टेक्नोलॉजी ग्रुप करेगा। The cabinet has also approved the launch of second phase of Swachh Bharat mission that will cover all rural areas now as well. यह स्वच्छ भारत की अब दूसरा चरण आया जिसमें ODF प्लस का मतलब है कि देहातों में भी जो कचरा प्लास्टिक का हो, दूसरा गीला कचरा हो, तो सब कचरे का निष्पादन भी ठीक तरीके से हो, ये जरूरी है। The Union Cabinet also approved the historic bill for the welfare of women in the country. The government will introduce assisted reproductive technology regulation bill in this session of the Parliament. This is a path-breaking step taken by the government to protect women's reproductive rights. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत की कैबिनेट ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसको अगर हम सरोगेसी रेगुलेशन बिल, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल की दृष्टि से देखें तो ये निर्णय which is the introduction of assisted reproductive technology regulation bill 2020, ये तीनों निर्णय भारत को अब विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स में विश्व में गवर्नेंस लीडर के रूप में स्थापित करेगा। This bill hopes to establish a national registry and registration authority which will be applicable to all clinics and medical professionals who operate and serve in the field of assisted reproductive technology. Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar released the reference annual books India 2020 and Bharat 2020. The books carry exhaustive and comprehensive information about India and the activities, progress, achievements of various government ministries, departments and organizations during the year. The book is important for researchers, students of competitive exams and all educational institutions. Reference Annual India 2020 and Bharat 2020 carry exhaustive and comprehensive information about the country's various activities, progress and achievements by different ministries, departments and organizations during the year. Yearbook India 2020, published by Publication Division and prepared by New Media Wing of Information and Broadcasting Ministry. And this is one good program which is continued for last 64 years. It's a record of kind. And this yearbook is becoming popular day by day. Many competitive exam students and many others also refer it as a reference book because this is official. Here there is not a single reference which is without reference, and therefore this book's value is not about printing and other things, but it is about
the value the book carries. And therefore, I expect that publication division will come out with many more books of this kind which will be highly popular and highly useful. Today I am particularly happy that this digital edition of this also is been published. The first meeting of Ram Mandir Trust to oversee construction of a Ram temple at Ayodhya is underway in New Delhi at the residence of K. Parasaran, the head of the trust. The trust has been constituted by the government. The trust meeting is likely to finalize the date to start construction of the temple. Prime Minister Modi had announced the formation of the 15-member trust in Parliament on February 5th. Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has 7 members, 5 nominated and 3 trustees. The trust was formed in adherence to Supreme Court verdict in Ayodhya dispute in November last year. Senior lawyer Parasaran has been named the head of this trust. And Prime Minister Modi visited Hunar Haat today. He visited the stalls of master artisans, craftsmen and culinary experts from across the country participating in Hunar Haat. More than 250 such stalls have been set up at India Gate lawns. More than 50% of the artisans participating are women. Prime Minister interacted with the participating artisans at the Haat and also witnessed cultural programs. Prime Minister Modi said Hunar Haat reflects the government's commitment to provide employment opportunities as well as preserve and promote India's indigenous traditional legacy, many of which are on the verge of extinction. The theme of this year's Hunar Haat is Kaushal Ko Kaam. About 3 lakh master artisans, craftsmen, culinary experts have been provided employment and opportunities through Hunar Haat in the past 3 years. These beneficiaries include a large number of women artisans. And those are visuals of Prime Minister's visit to Hunar Haat. Over 250 stalls have been put up by artisans from across the country. Prime Minister took a first-hand look at different artifacts, crafts at the Hunar Haat. During the visit, Prime Minister also interacted with the various artisans and discussed the various crafts and aspirations. Those are visuals of Prime Minister Narendra Modi's visit to Hunar Haat earlier today. Artisans from diverse background are at the Hunar Haat, and Prime Minister also enjoyed the local delicacies at the Hunar Haat, which is seeing large-scale visitors to take a look at over 250 stalls that have been put by artisans from across the country. A special occasion and special occasion it was for the artisans there as well. And my colleague Sudhakar is present. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudhakar is present at Hunar Haat. So Sudhakar, we can hear you. A special moment it must have been for the Prime Minister and for the artisans to meet each other at the Hunar Haat. Sudhakar. जी देखिए शुभेंदु, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और खास तौर से ये वो लोग हैं एक तरह से कह सकते हैं जिनकी कला लुप्त की तरह हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। उसको कला को सजाया संवारा गया है, चाहे ये खान पान की चीजें हो
किस सरलता के साथ प्रधानमंत्री न सिर्फ उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की, जो वहाँ खान पान था उसका लुत्फ उठाया, जो तमाम लोग वहाँ विजिट करने के लिए आए थे उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ। और ये एक पहचान है प्रधानमंत्री की, वो किस तरह से कैसे जो छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी की जा सकती है उसकी वो बात करते हैं। हुनर हाट की अगर खासतौर से अगर आपको बात बताऊं तो जो वो कलाएं चाहे आर्ट हो, टेक्सटाइल हो या कई तमाम दूसरी चीजें हो, एक तरह से लुप्त होने के कगार पर थी। कम से कम उन जागृत करके और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोज पिछले सिर्फ 3 वर्षों में मिला है। और एक तरह से इसको एक कह सकते हैं कि उद्योग की तरह से इस आगे बढ़ाया गया है, एक इंडिया इसको बनाया गया है। तो उसकी तस्वीरें हैं ये। प्रधानमंत्री को पता है कि प्रधानमंत्री उनका ये मानना है कि ये जो तमाम लोग हैं, ये जो नए भारत की कहानी है ये लोग लिख सकते हैं, इनके हाथों में वो हुनर है। शायद इस हुनर नाम के पीछे उनकी सलाह, उनका निर्देश भी रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इन लोगों के हाथों में वो हुनर है, वो नए भारत का जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को गढ़ सकते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से एक तल्लीनता के साथ एक एक आर्टिस्ट से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उनसे की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। उनकी ओर से, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है। और ये सीधा संवाद का जो उनका तरीका होता है, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं, मंत्रालयों के भरोसे नहीं, डिपार्टमेंट्स के भरोसे नहीं, एक सीधा संवाद, कलाकारों से सीधे मुलाकात, आम लोगों से सीधे मुलाकात, उनसे जानना और ग्राउंड पर वाकई क्या कुछ काम हो रहा है उसको देखना लगता है। लोग भी रहे हैं किस तरह कला को तो उन तमाम पहलुओं ये देख सकते हैं कि किस इतनी बड़ी भीड़ जो ये राजपथ में दिल्ली में लगा हुआ है, ये हुनर हाट, कितनी बड़ी भीड़ आई हुई है। तो निश्चित तौर पर ये जो उनकी पहल थी कितनी बड़ी सफल है। और बहुत ये सुंदर तस्वीरें प्रधानमंत्री की, और सिर्फ ये बड़ा है कि वो हर एक छोटे पहलू उसकी करते हैं, और सीधा इंटरेक्शन, एक सीधा संवाद, उसमें उनका भरोसा है। और ये जो लोग हैं जिनकी कला को सजाया संवारा गया है, कई दशकों से जिस सरकारों का ध्यान नहीं गया था, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये खुशी इन तमाम लोगों के चेहरे पर भी देख सकते हैं आप, शुभेंदु। और सुधाकर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो आर्टिसांस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री ने। कोई इंसाइट, क्या बातचीत हुई? अलग अलग लोगों से, एज ग्रुप से प्रधानमंत्री मिले और बातचीत की, सेल्फी भी खिंचवाई, क्या बातचीत हुई, कुछ पता चला सुधाकर? देखिए, ये जानना कोई ये रहस्य की बात नहीं है शुभेंदु। प्रधानमंत्री जिस सहजता से, जिस तरह से और लुत्फ उठा रहे हैं, देखिए आप, उन्होंने लिट्टी चोखा वो खाए, उसके बाद उन्होंने चाय का वहाँ सेवन किया। तो जो लोकल फूड है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, उसका उन्होंने सेवन किया। कोई अगर उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था तो उनको भी उन्होंने निराश नहीं किया। और वो सुनने के लिए, वो अपनी बताने के लिए प्रधानमंत्री नहीं वहाँ पहुंचे थे, हाँ, लोगों की सुनने के लिए गए थे। जो ग्राउंड रियलिटीज है किस तरह से वो जानने गए थे, कलाकारों से बात करने के लिए गए थे। तो वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये इनका अपना प्रधानमंत्री का ये तरीका है, ये स्टाइल है। और इस सहजता, सरलता से दिल्ली में बिना सुरक्षा के तामझाम के आप देख सकते हैं कि इस तरह से आम लोग भी उनसे मिल पा रहे हैं, उनसे बातें कर पा रहे हैं। तो सुरक्षा का जो एक तामझाम होता है, उस तामझाम को कहीं ना कहीं किनारे पर रखते हुए, ताकि वो आम लोगों से संवाद कर सके, कलाकारों से बात कर सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री खुद है, वो चाहते हैं कि उनको एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन की सीधे जानकारी मिले, लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों के बारे में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और हुनर हाट की जो ये शुरुआत है, हम जानते हैं कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में हुनर हाट को
काफी प्रचारित किया गया है, काफी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग में इस हुनर हाट में 250 स्टॉल्स थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के, खाने के, टेक्सटाइल के, और इंडिया गेट का जो लॉन है उसमें ये लगाया गया। काफी महत्वपूर्ण पहलू भी है ये जो देखिए राजपथ का जो एरिया है, 26 जनवरी को पहले के दशकों की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के पहले के वर्षों की बात करें तो एक तरह से वीरान सा रहता था। 26 जनवरी के समय उसमें जो राजपथ पर कार्यक्रम होता था उसके बाद महीनों तक सामान पड़ा रहता था। लेकिन एक तरह से जब प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये पूरा इस तरह के कार्यक्रम जिससे भारत के ये जो नायक, ये जो कलाकार है, ये जो नया भारत बनाना चाहते उनको अपने कला का और अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का मौका मिले। और दिल्ली में देश के दूसरे शहरों में जो लोग इन क्षमताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं तो उनके साथ एक कनेक्शन हो, उनके साथ एक कनेक्ट हो, तो उसकी एक बात। और इस साल का अगर थीम है उसकी अगर बात करें तो इस साल का हुनर हाट का ये थीम रखा गया। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि पिछले सिर्फ 3 वर्षों में जो आर्टिशियंस हो, क्राफ्ट्समैन हो, कुलिनरी एक्सपर्ट्स हो, उसमें हुनर हाट के जरिए 3 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें बड़ी संख्या जो महिलाएं हैं उनकी है, और जो आधी आबादी हमारी उनकी बड़ी संख्या। और ये जो तमाम स्टॉल्स पर उनको देख भी सकते हैं। जी सुधाकर, धन्यवाद आपका इन सभी अपडेट्स के लिए। हुनर हाट में प्रधानमंत्री मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी earlier today visited Hunar Haat. It's taking place in the lawns of the India Gate. Over 250 stalls by artisans from across the country have been set up at this hut, and Prime Minister took this opportunity to reach out to people, the artisans, the craftsmen, and interact with them directly, and also enjoyed a good lunch at the Hunar Haat. With those updates, we conclude this bulletin. Namaskar.